Okay, we are reading about the conquest of Bengal. Conquest means victory of Bengal. How the craft and industries were declining in India and how the Bengal will be taking its place. So the Bengal eventually the whole of India opened up a vast market for manufactured textiles from Britain. सारे मार्केट्स की जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इंडिया की वो सारा मार्केट किसने कैप्चर कर लिया था? ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था. नाउ द Industrial Revolution was already in full swag and Britain began to dump its finished textile in India. और ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा अपने डम्प्ड प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया में ही फिनिश्ड करना स्टार्ट कर दिया. और ब्रिटेन तो बहुत हाइपर था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे प्रोडक्ट्स है ना इंडिया के. लेकिन ब्रिटेन ने अपनी मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल में आगे हो गया था. इंडिया वंस द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर और इंडिया वंस फिर से बन गया एक्सपोर्टर. ब्रिटेन में वॉज नाउ फोर्स टू बिकम एन इम्पोर्टर. लेकिन उनको फोर्स किया गया कि इंडिया को वालों को कि आप इम्पोर्टर करिए. द ब्रिटिश बिगेन टू फॉलो द पॉलिसी वन वे फ्री ट्रेड में ब्रिटिश ने चालाकी की और ब्रिटिश ने एक पॉलिसी निकाली कि एक ही तरफ से आप कर सकते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. विच मीन्स दैट ब्रिटिश टेक्सटाइल कमिंग इन टू इंडिया did not pay any duty while the Indian textile sent to England has to pay up primitive duties. That means वन वे मीन्स आपको हम सप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्ट्स लेकिन हम कोई ड्यूटीज़ पे नहीं करेंगे. लेकिन ब्रिटेन में आप सप्लाई करोगे तो यू हैव टू पे द ड्यूटीज़. सो दिस अलॉन्ग विद द फैक्ट द ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ्स वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन मेड इट मच चीपर दैन द इंडियन टेक्सटाइल. जिसके कारण इंडियन के टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स है वो कॉस्टली हो गए एज़ कम्पेयर फ्रॉम द ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल. सो इंडियन प्रोड्यूसर विल थ्रो आउट फ्रॉम बिजनेसेस. ये भी एक रीज़न था वन वे फ्री ट्रेड बाय विच इंडियन विल बी डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल एंड क्राफ्ट सेक्टर. देन टुडे वी वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस, bring some goods into India from another country. You have to pay a custom duty on that goods. So now why does the Indian government charge this duty? As the British went about coining one Indian territory after another, the native rulers, nobles, landlords, other who patronized the craftsmen lost their power. जिसके कारण ब्रिटिश की ये पॉलिसी के कारण सारे जो क्राफ्टमैन से जिनके पावर्स लॉस्ट हो गए थे क्योंकि प्रोडक्ट्स कोई परचेज नहीं कर रहा था, हाई कॉस्ट पड़ रहा था मशीन लेबर मेड्स प्रोडक्ट्स में. As a result, suddenly this decline in demand and they lose their market, particularly extensive market lose कर दिया totally इंडिया वालों ने. इसका impact क्या हुआ था? So the impact, the decline of Indian handicraft transformed India into the exporter of raw material and the importer of British manufactured goods. अब हम क्या करने लगे थे? हमने स्टॉप कर दिया बनाना ही, हैंड क्राफ्ट बनाना ही स्टॉप कर दिया और हमने प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं किया. हम सीधे जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर करते थे उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो मच चीपर थे अपन के प्रोडक्ट से. दिस गुड्स एंटर इन द इंडियन मार्केट वर्चुअली फ्री एंड फाइन गुड्स वर कैप्ट आउट ऑफ द ब्रिटेन मार्केट्स. ब्रिटिश cotton cross folded the Indian market and many weavers and spinners become jobless. ब्रिटिश ने अपना पूरा मार्केट कवर कर दिया इंडिया में और इंडिया के जो भी थे वीवर्स थे डायर्स थे सब जॉबलेस हो गए. क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया इंडिया वालों ने क्योंकि उनको यूज़ करने वाला कोई नहीं था है ना. नोबडी विल यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियंस. सो वी विल स्टॉप मेकिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड फुली ब्रिटिश वर टेकिंग ओवर द इंडियन मार्केट. Deurbanization means we are declining in the industries and we will become a deurbanization is urban area से कम हो जाना. So large scale deurbanization will be the main center of 18th century such which will be decentralized है ना. तो कौन कौन से थे? मुसंगाबाद, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये सब आपके कौन से स्टेट्स थे जो आपकी डिक्लाइन हो गए थे, डीअर्बनाइजेशन हो गए थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटेन है ना. तो दिस आर द मार्केट्स विच आर डीअर्बनाइज है ना. पैटलोगनी ये सब आपके मछलीपट्टनम ये सब आपके डिक्लाइन हो गए थे. बाय द इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड द चेंजेस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर. फिर हमने बोला अब एग्रीकल्चर वी हैव an occupation to do. For generation, weaver, spinner become practicing their crop. They do not possess any other skills, so they have to move to the agriculture. So once they have become jobless, they become a agriculture labor. Since modern machine-based industry developed late in India,
they could get observed in factories. As a result, there are large scale under employment in agriculture. जिसके कारण बहुत सारे लोग किस पे मूव कर दिए, एग्रीकल्चर में मूव कर दिए, एग्रीकल्चर लेबर्स बन गए. क्यों? क्योंकि वो जॉबलेस हो गए थे. सो लार्ज स्केल अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इन इंडिया. Growth of modern industry. By this, growth of modern industries will be taking place. Means we have already read in the previous topics that Britain wanted India to remain one colony only and exploit it करते रहते थे वो. However, despite the reticency of the British to start modern industries in India, and they will start their own industry in India, Britishers, the process of industrialization started in 1850s में न्यू अपनी खुद की इंडस्ट्री सेट कर दी इंडिया में, and they will start their processing. So most mills were set up in Delhi by the businessmen. बहुत सारे wealthy businessmen ने इंडिया में ही अपनी फैक्ट्रीज को ओपन कर दिया of cotton textile. So the first cotton textile which was set by the Britishers, which was set by the Convict Nanabai in 1854, is in Bombay. This is a one-word question also. Bombay was an ideal center of sending this means taking the cotton textile industries on the western India. By 1900, nearly 100 mills were operating in Bombay. Later, many more mills were also set up, especially in Ahmedabad and Kanpur. बॉम्बे में फर्स्ट सेट हुई, दैन अहमदाबाद में, दैन कानपुर में. मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओन बाय द इंडियंस. लेकिन इंडियंस ने भी उस कॉटन इंडस्ट्रीज को ओन किया. ब्रिटेन में तो किया गया. इंडियंस वर ऑल्सो देयर. मैनी वीवर्स एंड एक्सपीरियंस हु लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ड्यू टू दिस इंडस्ट्री दे गेन देयर लाइवलीहुड. So declined the handicraft industries began to work in the mills. जो handicraft लॉ जॉबलेस हुए थे, अब वो किस में काम करने लगे थे? अब वो मिल्स में जाके काम करने लगे थे. By this topic is over. Iron and steel industries. So the iron and steel industry started developing also there in India around 20th century. Tata and Steel सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने सेटअप किया था साक्षी में in 1912. It is fully operational. Soon many iron and steel industries were being set up in Bengal and Mysore. The development of iron industries has been growth of engineering industries also. Other industries which are set up, that is the jute industries in Bengal. Most jute mills were owned by the British, and the coal mines starting in UK in 19th century. In Bihar, coal mines को भी start किया गया बिहार, बंगाल, उड़ीसा में. Railways के लिए other industries were also set up for in India. Other industries were also spread in India during the period of sugar, cement, paper, matches and glass. So these are the major industries which are set up in India after the 20th century.